हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडेस टॉपिक इज़ ब्लड। आज का टॉपिक ब्लड है, जिसमें हम ब्लड के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे, लाइक ब्लड फंक्शन, देयर कंपोजिशन, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ब्लड ग्रुप क्या क्या होते हैं, ल्यूको ल्यूकोसाइट्स क्या है, ऑर्गेनोलाइट्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या है। सारे सारे के सारे फंक्शन और उनके रोल, उनके डेफिनेशन सब पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट द ब्लड टॉपिक। टुडेस टॉपिक इज ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ब्लड हमारे जो बॉडी में होता है रेड कलर का, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसी को ब्लड बोलते हैं। वही ब्लड होता है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। और सेकेंड इज हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या है? हीमा मतलब ब्लड, एंड लॉजी मतलब स्टडी, मतलब ब्लड की स्टडी करना है, इसलिए उसको हीमेटोलॉजी का बोलते हैं। एंड हीमेटोलॉजी की डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं। हीमेटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ द ब्लड, इट कंपोजिशन, इट फंक्शन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है। हेमेटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन की, फंक्शन की, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट की, सब। दिस इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अभी ब्लड के फंक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। ऑक्सीजन जो है लंग से टिश्यू टिश्यू तक ट्रांसफ़र करते हैं, एंड फिर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू टू लंग्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करता है। कौन करता है? जो कि ब्लड है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। Now, nutrient from alimentary canal to tissue and cell waste to excretory organ, and blood nutrition provide करता है from the alimentary canal to tissue and cell waste to excretory organ. Third is hormone to the target tissue. Fourth is the transport of heat from more active to less active tissue. Fifth is the transport of the protective substance. Example, uh, antibiotic to the area if infected. And now, six is clotting factor that coagulate the blood to prevent the bleeding from ruptured blood cell. मतलब जब हमें कुछ लगता है, वहाँ से ब्लड आता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो ब्लड में, वो रप्चर स्किन को ये करता है। 7 is maintenance of the blood pH. Physical characteristic of the blood. Blood is a denser and viscous than the water, and temperature is 38 degrees Celsius, 100.4 Fahrenheit. Example, 1 degree higher than oral or rectal temperature, pH 7.35 to 7.45. The color varies from brighter red oxygenated to dark red deoxygenated. It constituent 8% of the total body mass, and volume is 5 to 8 liter in male and 4 to 5 liter in female. The different volume of the blood is vary with the body size. Composition of the blood is composed, मतलब ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड किस किस से बनता है, उसी का हम कंपोजिशन बोलते हैं। तो ब्लड इज composed of the liquid matrix plasma. Plasma is 55% and different cell suspended in 45%. Now let's see the plasma. Plasma, when the formed element means cell are removed from the blood, a straw color liquid is called plasma. जो ब्लड के साथ रहता है, जो येलो कलर का प्रेजेंट होता है ब्लड में, उसी का बोलते हैं प्लाज्मा। और कंपोजिशन देखते हैं प्लाज्मा का, मतलब प्लाज्मा में क्या क्या होता है।
Water is 90 to 20, 92%. Plasma protein. Second is inorganic salt. Third is nutrient. Fourth is waste material and hormones. Now protein. प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या है देखो, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रोनोजेन है, एक्सेट्रा है. दे मेक अप 7% ऑफ ब्लड. मतलब एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजेन से 7% प्लाज्मा बनता है. नाउ प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन. एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है इन बॉडी? Albumin is formed in the liver. They are responsible for maintaining the osmotic pressure of the blood. It also acts as a carrier molecule for liquid and steroid hormone. The body temperature ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है. एंड वो क्या करता है, एक्ट करता है एज अ कैरियर फॉर द लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन. नाउ सेकेंड इज ग्लोबुलिन. Globulin is formed in liver and lymphoid tissue. And there are the following function. Globulin. Immunoglobulin are produced by lymphocytes. Lymphocytes से immunoglobulin produce होता है. Act as a antibiotic और antibiotic bodies की तरह act करता है. And is a part of immature transportation of some hormone and mineral salt. Now fibrinogen. It is essential for blood clotting. Now other part, inorganic salt, nutrient, paste product, hormone gas, please read. And second is the cellular content. Erythrocyte. RBC. Erythrocyte means RBC. RBC क्या है? रेड ब्लड सेल. एंड ल्यूकोसाइट्स इज WBC. WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल. एंड प्लेटलेट को क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? ब्लड को क्लॉट करने में. नाउ सेलुलर कंटेंट. दे आर द प्रोड्यूसर बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस इन द बोन मैरो. बोन मैरो में जो हीमोपोएसिस प्रोसेस होता है उससे ये प्रोड्यूस होता है. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच द फॉर्मेड एलिमेंट ऑफ द ब्लड डेवलप इज कॉल्ड हीमोपोएसिस. Before birth, it takes place in liver, spleen, thymus, and lymph node in fetus. And red bone marrow become primary site in the last 3 months of birth and continue throughout life. आप समझ गए इसका मतलब क्या है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. RBC. The percentage of the total blood volume occupied by the RBC is called hematocrit. The process of RBC formation is known as erythropoiesis. RBC के formation की process को क्या बोलते हैं? Erythropoiesis. Now erythropoietin hormone EPO stimulate production of RBC. The hormone testosterone in the male stimulates the synthesis of the EPO, resulting in higher RBC count in male and lower value in the female. It is also due to loss of blood during menstruation. They are the biconcave disc without nucleus. It is involved in transport of oxygen and carbon dioxide when combined with oxygen O2. It gives red color to blood. They are flexible and their shape help in movement through thin capillary. The lifespan of is 120 days. RBC कब तक रहते हैं हमारे बॉडी में? एक 120 डे. 120 डे के बाद वो न्यू प्रोडक्शन होता है ब्लड का, RBC का. They are passes through various stages of development before entering the blood. It has two stages: maturation of the cell and formation of hemoglobin inside. Both vitamin B12 and folic acid are required for their maturation, which are absorbed from intestine. Intrinsic factor is required for absorption of vitamin B12. Normal daily requirement of folic acid is 100 to 200 mcg and B12 is 1 to 2 mcg.
Formation of hemoglobin. It is a complex of the ion containing heme and protein globulin. Now destruction of the RBC. It is by uh, reticulone endothelial cell, mainly in the spleen, bone marrow, and liver. The ion release is reused. The protein is reduced to bilirubin and transport to liver. Erythrocyte count. It is defined as a number. Now definition देखते हैं what is erythrocyte count. It is defined as the number of RBC per cube mm. In male 4.5 to 6.5 millimeter mmq, and in female 4.5 to 5 mmq. Now, packed cell volume means cell volume. Hemoglobin, please read. Now, ABO system. ABO system क्या है? ABO system is based on the presence or absence of the different antigen on RBC membrane and antibodies in the serum. The blood group are those classified as AB, and O. ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए होता है एंड एंटीबॉडी बी होता है. बी में एंटीजन बी होता है एंड एंटीबॉडी ए होता है. एंड ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी होता है और एंटीबॉडी नहीं होता है. और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी ए बी होती है. नाउ ए पर्सन जिस इंसान की बॉडी में ए नाम का ब्लड ग्रुप है तो वो किसको दे सकता है ब्लड, वो देखते हैं अभी. नाउ ए ग्रुप of the blood is donated to the A and AB. Now B group blood is donated to the B and AB, and blood group AB is donated to the AB blood group only. मतलब ए वाला जो इंसान है तो ए और ए बी वाले जो भी ब्लड ग्रुप होगा उनको दे सकते हैं. एंड बी वाला जो भी इंसान है वो बी और ए बी को दे सकते हैं. लेकिन ए बी वाला इंसान सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ही खून दे सकता है. और ओ वाला इंसान हाँ यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं. और अभी देखते हैं ए ब्लड ग्रुप वाला किससे ले सकता है ब्लड. A वाला receive from the A and O. B वाला is B and O. AB is received from the A, B, AB and O. Because AB does not have any antibodies, it can receive blood from all the blood groups, so it is universal recipient. AB क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब AB सबसे ले सकता है. एंड ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर, मतलब सबको दे सकते हैं. नाउ रिजर्व फैक्टर. RBC cell membrane has a RH antigen. 85% of people are RH positive. RH negative people can make antibody for RH antigen under certain circumstances. Example, pregnancy or as a result of incompatible blood transfusion. Now let's see the importance of blood group. Guys, please read this importance of the blood group. I will further continue the leukocytes. Leukocytes मतलब क्या है? WBC. उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है इन ह्यूमंस ब्लड is 4,000 to 10,000 mmq. There are up to 10 granulocyte or granulocyte. Now let's see the granulocyte. All the granulocytes have a multi-lobe nuclei in their cytoplasm. Depending upon the type of dye they taken up, they are classified as eosinophil, basophil, and neutrophil. Eosinophil take up red acidic dye
Eosin when stained and appear red. Basophil take a basic blue dye and methylene blue and appear blue. Neutrophil take both the dye and appear purple. Agranulocyte. They have a large nucleus in the cytoplasm and no granules. They are of two types, monocytes and lymphocytes. Function of the WBC neutrophils. They protect the blood against microbes and also remove the cell debris. They have 3 to 7 lobes. Their number increase in microbial infection, extensive tissue damage like inflammation, burn, myocardial infection, leukemia, मतलब blood cancer, heavy smoking, as it causes inflammation of airway. Now let's see the eosinophil. They are the specialized role in elimination of the parasite like worm. They are also found at the site of allergic inflammation like airway and skin allergy. Now basophil. They are associated with the allergic reaction. The granule have a heparin and histamine. Monocytes. They produce interleukin 1, which act on a hypothalamus, causing increase in body temperature and stimulate the production of globulin by the liver and enhance the production of T lymphocytes and play an important function in immunity. Lymphocyte. They are the presence in blood and lymphatic tissue such as lymph node and spleen. They are able to respond to antigen like fungi, bacteria, pollen, and some drug platelet. Thrombocytes. They are the non-nuclear cell. They promote blood clot, which cause a hemostasis. The normal count is 2 lakh to 3 lakh 15,000 mm3. The lifespan is 8 to 11 days. Now hemostasis ये क्या होता है? Blood clotting. When the blood vessel is damaged or loss of blood is stopped the following way. Please read this topic. Now I will let you know. Vasoconstriction. When the platelet come in contact with the damaged blood vessel, they other to it. मतलब जब हमें कुछ लगता है वहाँ पर घाव बन जाते हैं वहाँ पे तब प्लेटलेट कांटेक्ट होता है उससे और वो वहाँ पे जम जाता है, ठीक है. फिर सेरोटोनिन इज रिलीज विच कंस्ट्रक्ट द ब्लड. फिर वहाँ पे सेरोटोनिन रिलीज होता है जो कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है. सेकेंड इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. Adhered platelet attract more platelet which form a platelet plug. This form permanent seal. और जहाँ पे हमने प्लेटलेट आके जम जाते हैं वहाँ पे और प्लेटलेट आके वहाँ पे जमा हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट प्लग. और वहाँ पे वो क्या करते हैं? टेम्पररी सील कर देते हैं. मतलब वहाँ पे जगह जो फटी हुई होगी उसको सील बंद कर देंगे. Third is coagulation, blood clogging. The thromboplastocin plastin released by damage of tissue cell. मतलब जब टिश्यू सेल डैमेज होता है तो वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है. and फिर क्या इंटर द ब्लड एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड कन्वर्ट. फिर ब्लड में दो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो बना था और ब्लड में इंटर होगा और इंटर होगा जहाँ पे कैल्शियम आयन पहले से प्रेजेंट होगा तो वो दोनों मिलके क्या करेंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोथ्रोम्बिन में. तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में. Now thrombin act on a fibrinogen and convert it to insoluble fibrin. The fibrin mean trap blood cells. This is known as clotting. Please read the below arrows which are written in a reaction type. This is easy to understand. Now erythrocytes disorder. इरेथ्रोसाइट में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? लाइक अनीमिया क्या है? जो कि बॉडी में जब ब्लड की कमी होती है तो मतलब खून की कमी बोलते हैं ना तो उसे अनीमिया बोलते हैं.
there is not enough hemoglobin available to carry sufficient oxygen from the lungs to tissue. Example condition in which oxygen carrying capacity of blood is reduced. Classification based on cause, all are written in below. First is impaired erythrocyte production, Rusmata iron deficiency anemia, megaloblastic hypoplastic anemia. Okay, or second, increase erythrocyte loss, hematolytic anemia, hemorrhagic. Now read the impaired erythrocyte production, megaloblastic anemia. Please read. Now pernicious anemia. It occurs in female between 45 to 65 years of age. It is an autoimmune disease in which autoantibody destroy intrinsic factor and parietal cell. Due to this, the absorption of vitamin B12 does not take place. Now, aplastic anemia. This is due to bone marrow failure in hypoplastic anemia. The bone marrow function is reduced and aplastic anemia is absent. Hemolytic anemia. They occur when red blood are destroyed, which while in circulation or are removed prematurely from circulation due to cell absorption. Now, hemolytic anemia. Due to genetic abnormality, hemoglobin synthesize the cell membrane friability increases and oxygen carrying capacity and lifespan decreases. Sickle cell anemia and thalassemia. Now, sickle cell anemia. This is the abnormal hemoglobin molecule become misshapen when deoxygenated, making erythrocytes sickle shape. The lifespan is reduced due to earlier hemolysis. This causes anemia. The cell does not move smoothly through the blood vessel. Thalassemia. There is a reduced globulin synthesis. With reduced hemoglobin synthesis and increased friability of the cell membrane, leading to earlier hemolysis. Hemolytic disorder of the newborn. This is due to Rh factor. Now read other part, please. I will further continue leukocyte disorder. Leukopenia. In this condition, the total leukocytes count is less than 4,000 mm. It occurs due to damage of the bone marrow by X-ray and leukemia. Granulocytopenia or neutropenia. This is used to indicate abnormal reduction in one of the granulocyte. As 40 to 75 of granulocyte are neutralized is also known as neutropenia. Please read other. Hemopoiesis. Hemopoiesis is from Greek meaning to make a new blood, which refers to the formation of blood cellular composition or blood cellular composition are derived from the hematopoietic stem cell. Hematopoietic stem cell. Hematopoietic stem cells reside in the medulla of the bone. जो bone के medulla में hemopoietic stem cells are रहते हैं. They are very unique as they have a ability to mature into all the different blood cell type and tissue. They are self-renewed cells. Bone marrow found in a spongy gelatinous tissue found in a hollow space in the interior of the bone. In children, hemopoiesis occur in a long bone, femur, and tibia. In adult, occur in mostly pelvic, cranium, vertebra, and sternum. Now, extramedullary hemopoiesis, liver and spleen. In order to form blood cell, pluripotent stem cell in the red bone marrow produced to further type of stem cell, which have a capacity to develop into several types of cells. These stem cells are called myeloid stem cell and lymphocyte stem cell. Myeloid
Myeloid stem cells begin their development in red bone marrow and give rise to RBC, platelet, monocyte, neutrophils, eosinophil, and basophil. Lymphoid stem cells begin their development in red bone marrow for completely lymphatic tissue. They give rise to lymphocytes. During hemopoiesis, some of the myeloid cells differentiate into progenitor cells, other myeloid stem cells, and